Hi, good evening, everyone. Hi, good evening, everyone. Okay, so with the title itself, this session is particularly about IP University. Okay, so काफी सारे students हैं who wanted to inquire about IP University, their entry or their admission process, their registration and everything. Okay, because when it comes to your admissions, in particular, if you want to be in Delhi, there are few institutes जो आपकी bucket list में होते ही होते हैं, right? Of course, top notch is Delhi School, JNU, then you have Ambedkar as well, right? And then, of course, you have IP University as well. So there are plenty of institutions, along with, of course, SAU, TERI. There are numerous institutions, right? But again, IP University is considered among at least top tier institution post after DSC, JNU, and so on, right? So काफी सारे student wanted to inquire about the registration process, about the seats, about the admission process and stuff. Okay, so this is a short session on IPU. Okay, so as you all of you can see, this is the home page, this is the home website for IP University, right? And let's go step by step, right? So if you go and scroll down a bit, right, there you can see two options, namely admission 2026 and उसके नीचे admission 26-27, and यहाँ पे दो options है, पहला for the page of admission, the second one being your online portal. ठीक है, so the online portal is nothing but directly takes you to द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जैसे आपने CUT का देखा है, IIT का देखा है, उसी तरीके से दिस इज ऑल्सो अ वेबसाइट वेयर यू गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एडमिशन एट IPU. ठीक है, सो इस पे बाद में आते हैं. ओके, सो दैट इज योर पोर्टल फ्रॉम वेयर यू कैन गो एंड स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन, राइट नाउ. अब ईदर यू कैन गो डायरेक्टली, यहाँ पे ब्रोशर है, शेड्यूलिंग है, एवरीथिंग है. सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, राइट? So let me go to the brochure यहाँ पे. ठीक है, not this one, one second. हाँ, सो एडमिशन 26 मेन पेज, और यहाँ पे सारी जो भी नोटिफिकेशन होंगी, जो भी अपडेट होंगी, वो सारी आपको इस पेज पे मिलेगी. द रीजन आई एम हाईलाइटिंग इज दिस, इफ यू वांट यू कैन बुक मार्क दिस पर्टिकुलर पेज व्हेन यू गो टू द वेबसाइट, राइट? अब यहाँ पे जाके यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन PG admission brochure 2026-27, right? And the moment you will click on the brochure, this is the website, right? So ये आपका brochure है for IP University 26-27 admissions. First thing first, let's look at the timeline, what they have come up with, right? So the starting date is 2nd of Feb, which means it's already started, right? And the closing date is 31st March 2026, right? So in between you had your GATE exam, in between you had your IIT GEM exam. Now both of them are over. You can clearly focus on the process of registering for IPU in case at all IPU is in the list of admissions जहाँ पे आप admission seek कर रहे हो, right? And yeah, so 2nd Feb to 31st of March, and this will also be updated on the tracker as well. Okay, अब ये हुआ window to register for IPU. Now, what's the
प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद कौन सा टेस्ट है, क्या इनटेक है, कितने स्टूडेंट्स इनटेक है, एंड सो ऑन. सो सेकंड पॉइंट इज द कंडक्ट ऑफ आईपीयू का खुद का एंट्रेंस टेस्ट, राइट, जिसको दे कॉल इट एज जीजीएस आईपीयू सेट. ओके. सो सेट 26 जो डेट है, उसकी जो विंडो दी गई है, दैट इज 25 टू 17 राइट. सो अब ये विंडो क्यों दी गई है? इट मीन्स कि इस विंडो के अंदर सारे जो भी डोमेन्स होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे कॉमर्स हो, मैथ्स हो, स्टैट्स हो, इको के हो, उन सबके एग्जाम्स इसके अंदर होंगे. ठीक है. अब अगर आप इसको देखोगे, इट साउंड्स लाइक सीयूईटी इन इटसेल्फ, मतलब खुद का एंट्रेंस अपने आप में, राइट. अब इससे एक आइडिया ये मिलता है कि मोस्ट लाइकली आईपीयू इज नॉट अंडर सीयूईटी, मीनिंग आप सीयूईटी का पेपर दोगे, शायद वो यहाँ पे कंसिडर हो, शायद वो ना हो, दैट विल सी गोइंग फॉरवर्ड, राइट. लेकिन आईपीयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए, देन यू हैव टू सिट फॉर देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम, विच इज जीजीएस आईपीयू सेट 2026, जो कि विंडो है 25 टू 17 ओके. वो शेड्यूलिंग वंस दे फाइनलाइज दे विल इन्फॉर्म यू, जैसे जैसे आपके सीयूटी का हुआ था उसी तरीके से दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट द डेट फॉर इकोनॉमिक्स. ठीक है. अब डायरेक्टली आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे, एमए इकोनॉमिक्स, राइट. सो द कोर्स ऑफर्ड एट आईपीयू इज Masters in Economics, MA Economics, right? So it's not MSc Economics, it's MA Economics. That's the program name, right? Because बहुत से बच्चों को होता है whether they are offering MSc, whether they are offering MA, what exactly the course is all about. Depending on which आप सोचते हो कि quantitative होगा, theoretical होगा, that is what the parameter you guys come up with. But to sum it up, MA Economics is the course name at IP, right? Now, what's the program code? Okay, जैसे हम कहते हैं कि सीयूटी का पेपर कोड क्या है, राइट, जैसे COQP10, उसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी में एमएईको का जो प्रोग्राम कोड है, दैट इज 162. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके. सो द एडमिशन प्रोसेस गोज बाय, नंबर वन, सेट. सेट मीन्स आपका आईपीयू का खुद का एंट्रेंस टेस्ट. पॉइंट नंबर टू, विच इज सीयूटी विथ हाइफन. ओके. अब उसका मतलब क्या होता है? पहले तो आप इसका हेडर देखो, एडमिशन थ्रू एनएलटी सेट सीयूटी फॉर एकेडमिक सेशन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. In order of priority, meaning the preference will be given to set, then the preference will be given to, of course, there is no preference left, then the admissions or the opportunity will be given to the CUT score. ठीक है. So set score and then second number, second position पे will be your CUT score. ठीक है. आप ये होता है कैसे? So core duration is of course your master's course, it's for 2 years, and then they have MA Eco, right? So how it goes is eligibility criteria wise pehle, and then we'll go to the admission criteria. Eligibility criteria is pretty simple. Bachelor's in Eco with minimum 50% marks. Sorted. Bachelor's in Business Eco with 50% marks. ठीक है. सो उन्होंने दोनों ही ऑप्शंस को कंसिडर कर लिया, नॉर्मल इको विद ऑनर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स. ठीक है. सो दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट. इसमें ना मैथ्स का इशू, ना स्टैट्स का इशू, ना कुछ भी XYZ, ना क्लास 12, कुछ भी नहीं. स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर आउट. देन कम्स, अब हमने तो अपने ग्रेजुएशन में वी हैवंट स्टडीड इकोनॉमिक्स एट ऑल, व्हाट अबाउट अस. ठीक है. सो इन दैट केस, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, इन एनी डिसिप्लिन. ठीक है. अब चाहे मैं इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी, एनी डिसिप्लिन, who have passed mathematics or stats. That's another point. Mathematics or stats. एक और liberty कि we are not stringent or strict towards maths only. The option goes with maths or stats at undergraduation level. ठीक है. So आपने maths या stats में से कोई भी पढ़ा हो, लेकिन it has to be at undergraduation level. So they're not bothered about class 12th. ठीक है. They are not filtering out student based on class 12th. What they want is कि आपने बैचलर्स में कोई भी डोमेन पढ़ा हो, उसके साथ बस द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट यू नीड टू हैव और यू हैव मस्ट हैव पास्ड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स.
ठीक है। बैचलर्स एनी डिसिप्लिन विथ मैथ्स और स्टैट्स, ठीक है। और ऐसा भी कोई नहीं है कि उसमें दे आर आस्किंग वेरी फैंसी नंबर्स, बेसिक 50% इज बेयर मिनिमम, ठीक है। सो आई गेस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज प्रिटी straightforward, simple, and flexible. At the same time, maintaining the core of both mathematics and statistics as well, right? Because nowadays, at master's level, the bare minimum requirement is that you need to have basic knowledge of maths or stats. I would say maths preferably, but yeah, maths or stats. Okay. Now let's come to the admission criteria. Okay. Again, another important part. Why? Because they are not taking admission via CUET outrightly, ठीक है, डायरेक्टली। जैसे अगर मैं सीयूटी दूंगा तो मेरा टीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा डायरेक्टली, जेएनयू में भी होगा, आईजीडीआर में भी होगा, गोखले में भी होगा, राइट। सो दैट्स अ क्लियर कट पाथ, ठीक है। मुझे जाके उनका खुद का फॉर्म भरना है, बट माई सीयूटी स्कोर इज वैलिड, एक्सेप्टेबल बाय ऑल दीज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूशन, मैं उनके सामने सीयूटी स्कोर रखूंगा, दे विल हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। दे वोंट आस्क फॉर कोई इंटरव्यू, दे वोंट आस्क फॉर एनी रिटन पेपर और एनी अदर स्टेज XYZ, कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली एडमिशन होगा, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द कट ऑफ्स एंड एलिजिबिलिटी ऑफ योर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोलते हैं एडमिशन शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ सेट विच इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी, जीजीएस आईपीयू सेट, ठीक है। सो द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ सेट, so the preference directly comes to set. Then, अब क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है that we will honor CUET and we will take admission, ठीक है, so they have maintained their word, right? So what they come up and say is the vacant seats after exhausting the merit list, ठीक है, the vacant seat after exhausting the merit list of set will be filled through the merit list of CUT, ठीक है, विल बी फिल्ड विद द मेरिट लिस्ट ऑफ सीयूईटी। सो तो जो सीयूईटी का स्कोर होगा दैट दैट वोंट बी आउटराइटली, डायरेक्टली या फर्स्ट प्रेफरेंस में एक्सेप्ट नहीं होगा। पहली बार सीट तब आएंगी जब वहां एग्जॉस्ट हो जाएंगी आफ्टर द मेरिट लिस्ट ऑफ सेट, ठीक है। सो मोटा मोटा कहने की बात यह है, ठीक है, आप सीयूटी दे रहे हो, दो, परफॉर्म एज गुड एज पॉसिबल, बी अमंग द टॉप रैंकर्स। लेकिन अगर आप आईपीयू टारगेट कर रहे हो इन एनी केस सिनेरियो फॉर वट एवर रीजन, राइट, देन यू नीड टू बी श्योर कि मेरा एडमिशन का वहाँ पे जो प्रेफरेंस रहेगा या जो चांसेस रहेंगे, प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो सेट के थ्रू ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू सीयूईटी, because they themselves have mentioned academic session 26-27 in order of priority. And CUT को क्या मिलेगा? Vacant seat after exhausting set, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब मास्टर्स इन इको के लिए वो सीयूटी का कौन सा पेपर एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक्स के साथ स्टैट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। They are also accepting any other course as well, right? So they are not limiting themselves to economics only, ठीक है। But in case of IPU, they are accepting only economics, which is the paper code COQP10, ठीक है। तो ना ही स्टैट्स का ना ही मैथ्स का किसी और का सीयूटी का पेपर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा ना। कमिंग टू, अब सेट है क्या, सेट की हमने टाइमलाइन देख ली, 25 अप्रैल से 17 में, दैट्स द ड्यूरेशन ऑफ ऑल द सेट पेपर्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर द सब्जेक्ट बीइंग एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो उसमें ये इनको एक छोटा सा ओवरऑल ब्रीफ सा सिलेबस है, which is stats and mathematical methods of and introductory econometrics, so stats, maths, econometrics, इकोनॉमिक थ्योरी में माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल डेव एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब दे हैव आल्सो गिवन यू द बाइफिकेशन, बाइफिकेशन किस लिए, कि आप अपना जो टाइम है वो कहाँ ज्यादा स्पेंड करो, ठीक है। सो गोइंग अकॉर्डिंग टू द वेटेज थ्योरी, 30% इज गिवन टू द, यू कैन से, क्वांट वाला पार्ट, राइट, वेर इज द 70% preference or focus is given to the theoretical part. So that's the overall bifurcation of the syllabus for CUET for set at IPU, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसका भी एक रफ आइडिया मिल गया।
कि what's the syllabus or the subject and also the weightage. ठीक है. This we have done. Second. Okay. So यहाँ पे if you notice MA Eco में they are mentioning the intake of around maximum 60, right? And that is based on the final intake of 25-26. ठीक है? So that's about the number of seats you can say is around 60. ठीक है? So overall, yeah, I've already shared the timeline with you guys. Okay. If you have anything, you can shoot it in the comment section. कोई चीज that you want to ask about IPU? So there's a proper flow as well given for admission. ठीक है? They have their set. आप फॉर्म भरोगे. फॉर्म कहाँ पे भरोगे? फॉर्म आप भरोगे जाके यहाँ पे. वन सेकेंड. यहाँ पे एक सेकेंड. ये जो पोर्टल वाला लिंक है आप यहाँ पे जाके अप्लाई करोगे. ठीक है. अप्लाई भी करने के लिए एक छोटा सा मैं आपको बस वो दे देता हूँ. यू क्लिक ऑन द कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड विच इज IPU रजिस्ट्रेशन 2026 एंड देन यप देन आपका ये पोर्टल खुलेगा. यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है. देन यू कैन स्टार्ट. ठीक है. यू गाइस मस्ट बी प्रो बाय नाउ कंसिडरिंग इतने सारे फॉर्म्स आपने भर लिए हैं. सो यू गाइस शुड बी प्रो बाय नाउ. Right, so yeah, round one process which involves registration, set, declaration of result, and then counseling. ठीक है. So I guess जिन्होंने पहले कभी ग्रेजुएशन लेवल पे भी अगर IPU दिया है, so spot round and stuff that's common. ठीक है. तो they know the entire thing. हाँ कुछ मिसिंग है कुछ. If you want to ask, I'll wait for another 5-10 minutes. Okay. Seats I've already told you guys it's around 60. Seat allocation. हाँ, so you can also see एक बारी seat allocation. Delhi region 85 for the essential intake and outside Delhi 15 for all the students who are wanting to come to Delhi for IPU in particular. तो आप ये भी देख सकते हो that certain seats are kind of reserved for Delhi students and how much are available for outside Delhi region. ठीक है. That's always there at times. Mm, mm. Then you have other single girl child sports quota and other. I don't think so. I'm missing out on anything जो आपको जरूरत हो. I was looking at fee अगर कहीं पे दिख जाता so that I can tell you about the fee. And then I'll wrap up. ठीक है. Still requesting if anything is there, shoot it in the comment section and we'll discuss. Da, 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 yeah, da, da, da. Okay. These are the basic undertakings and forms. ठीक है. In case अभी कभी कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होता है, so that's the case. Any questions? Any query? If you want to discuss any particular university, so you can put it in the comment section, ठीक है? So that we can discuss that particular university. Fees is also, as far as I remember, काफी reasonable है, right? So you don't have to worry too much about it.
PG program, M.Tech, Pharma. ठीक ठीक है, we'll wrap up here. I'll wait for a minute or so, then I'll close the session. ठीक है. ओके गाइस, आई गेस ऑल द क्वेरीज हमने डिस्कस कर ली हैं. जो भी पॉसिबल आपके मन में डाउट आ सकता है, इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है, ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्टार्टिंग विद द रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन टू द विंडो ऑफ एग्जामिनेशन. मतलब रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, एग्जामिनेशन की विंडो क्या है, कोर्स का नाम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इनटेक क्या है, and of course the most important part कि what's the preference, कि सेट को प्रेफरेंस ज़्यादा है कि सीयूईटी को प्रेफरेंस ज़्यादा है. मतलब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन बैंगलोर इनटेक थ्रू सीयूईटी पीजी. ओके. भार्गवा, till last year they were taking via CUT only, and now that you have asked, give me a second, I'll confirm you right away. ठीक है, give me a second. अब आप पूछ रहे हो इतना एफर्ट लेके, सो लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट. टुडुम 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 टुडुम. और आपके सामने ही है ये, ठीक है. Okay, so I've gone to the university and I have searched for your university that you were asking for, which is Dr. B.R. Ambedkar, Bangalore, and here is your answer. Okay, so yes, they are accepting CUET right in front of you. Okay. And in eco, huh? So last year also we did conduct a session. We did conduct a session on Ambedkar, right? So if you want a detailed session on Ambedkar Bangalore, then you can drop it in the comment section. We'll have a session on that because they are offering number of masters in eco course. जैसे आप देख सकते हो, eco, financial development, and so on. And all of them are through COQP 10, which is economics. ठीक है. Thank you so much for joining in. Good night. Take care. Carry on with your CUET PG Economics preparation, and we'll meet you in another session.